Friends and comrades, before I even start to speak, I would just like to say that there is one person's presence whom we are all missing here in this People for Palestine, India for Palestine meeting, and that is Prabir Puryakas. And you know that he was, well, I don't need to tell you about his commitment to this cause and what he did to fulfill that commitment. He's not here with us today. He's fighting a very big battle and we are all with him in solidarity, but we do miss him today. I just wanted to say that. When I wrote this small booklet about Palestine and I went and distributed it and I was talking to people, especially younger people, I realized that there's a lot that is not known about Palestine. बहुत सी बातें हैं जो लोगों को पता नहीं है, और जब उनको पता चलता है, when they hear these facts, then their rage, their anger really comes to the fore. So I think that even today a lot has been said. I don't want to repeat what has been said. I would just like to talk about a few more points. But I think that the first thing that I would like to say is that the big question that many people are asking, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये अमेरिका बार बार अपना वीटो पैलेस्टाइन के पक्ष में क्यों इस्तेमाल करता है? वो तो लैंड ऑफ द फ्री और क्या पैलेस्टाइन के खिलाफ इस्तेमाल करता है, इजराइल के पक्ष में इस्तेमाल करता है. That's a very big question that many people ask because there is still an illusion that it's the land of the free and the home of the brave and all that. Therefore human rights, therefore democracy, the US stands for all these things. तो बहुत बड़ा सवाल लोग पूछते हैं that if they stand for these things, why are they continuously using this veto? This was done before, but now when everything is there for us to see, even the International Court of Justice is saying plausibly genocide is happening, why are they doing it? So I think that the first thing that we need to remember is that this is an imperialist war that we are seeing, and that Israel is an outpost of imperialism that was deliberately planted in the place that it is planted for very, very strong reasons, as an outpost of first English, British, and then US imperialism. It was like a dagger aimed at the heart of the Arab world, and certainly the control of oil was a very big factor in that. तो ये हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि जब हम कहते हैं कि क्यों अमेरिका बार बार वीटो कर रहा है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि साम्राज्यवाद क्या है. आज उसका नकाब अगर कभी था तो वो बिल्कुल गिर गया है, उसका घिनौना चेहरा बिल्कुल सामने है और वो बता रहा है कि ये है साम्राज्यवाद. हम नरसंहार के पक्ष में भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं अगर नरसंहार करने वाला हमारे पक्ष में हो, हमारे पक्ष का हो. तो ये जो इजराइल बनाया ही गया था, उसके जन्म को अगर हम देखें तो वो साम्राज्यवाद का एक टापू के रूप में बनाया गया था, जानबूझ करके. Somebody said, I saw an interview today, some people suggested we can go to Uganda. There's no question of you're going to Uganda. You had to go there. You are the outpost of imperialism. उसका जो नक्शा है वो भी एक चाकू की तरह है जिसकी नोक अरब दुनिया के दिल की तरफ है. ये उनके तेल पर नियंत्रण रखने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश थी. बहुत से लोग इन चीज़ों को मानते नहीं हैं. बहुत से लोग सालों से कह रहे हैं आप लोग तो साजिशों की बात बहुत करते हैं, कंस्पिरेसी थियरीज की बात बहुत करते हैं. लेकिन आज मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों को अब सच मानने के लिए दुनिया के जो लोग शांति चाहते हैं वो मजबूर हो रहे हैं, और जो ये असली चेहरा है साम्राज्यवाद का उसको भी लोग अब पहचानने लगे हैं. The mask has fallen off and the real face of imperialism is there for all of us to see. They will go to any lengths to defend that outpost of theirs which was deliberately created. और यहाँ पर मैं बच्चों को भी बताती हूँ और वो उनको ताज्जुब होता है कि आपको याद करना चाहिए कि 1948 में in 1948 there was no country known as Israel in this world. वो पैलेस्टाइन था. There was only a country called Palestine.
लेकिन लगातार उसका नक्शा इजरायली हुकूमत की तरफ से, मतलब इवन बेन गुरियन हैड अ पैलेस्टीनियन पासपोर्ट, बट दैट मैप ऑफ इजराइल हैज बीन कंसिस्टेंटली चेंज्ड बाय द इजरायली गवर्नमेंट। उस नक्शे को लगातार बदला गया है और जो पैलेस्टीनियंस की का अनुपात है उस जनसंख्या में वो करीब करीब 70% है। लेकिन धीरे धीरे वो नक्शा इस तरह से बदला गया कि 70% लोगों को करीब करीब 25% ज़मीन में घेर करके एक दरबे के अंदर बंद करके रखा गया और 25% लोगों के हाथ में 75% ज़मीन आई। सो पैलेस्टाइन वॉज द कंट्री. Israel did not exist in 1948. There was only Palestine. But regularly the government of Israel has been changing that map, altering that map, and over the years, a large section of the population, about 70% of the people who happen to be Palestinians, have been just herded into about 20% of the area from where now they want to throw them out even further. तो ये जो इज़राइल की हमेशा से इनका इरादा रहा है और जिस इरादे का मतलब कभी कभी कुछ अच्छी बातें कुछ यूएस प्रेसिडेंट्स वगैरह ने कहा, ओ यू आर गोइंग टू फार, यू शुडंट डू दिस, यू आर नॉटी बॉयज, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ इट, बट दे नेवर रियली इंटरवीन टू स्टॉप दिस प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग दैट मैप. And finally, you know, now Mr. Netanyahu stands up and says, well, now here's the new map. And in this new map, there is no Palestine. There is no Palestine. And that is what we must remember before we start talking about October 7th and this, that and the other, because this is what their intention was. Their intention was very clear. जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि अब ये नया नक्शा है. अभी तक तो हम इनको खदेड़ रहे थे, लेकिन अब ये नया नक्शा है. इस नए नक्शे में पैलेस्टाइन के लिए और फिलिस्तीनियों के लिए कोई जगह है ही नहीं. अब इजराइल ही इजराइल बचेगा. तो अब सवाल ये उठता है कि ये हमारे सामने हकीकत है. अब हो क्या रहा है? वी आर सीइंग व्हाट the US is doing. We are seeing what the UK was doing. 2 days back they abstained. 2 दिन पहले उनको भी थोड़ी सी शर्म आई. इंग्लैंड को उन्होंने तटस्थ रहने का फैसला लिया. फ्रांस और जर्मनी जो पहले अमेरिका का साथ देते थे अब वो भी थोड़ा सा पीछे हटने लगे हैं. So this is happening, and this is happening because of the pressure of the people. This is happening because of the pressure of the protests, of the people who are standing up for the Palestinians. And I would like to add here that some people look at this conflict as a religious conflict. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई एक धार्मिक टकराव है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा सोचने से हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और जो लाखों जूइश मूल के लोग पूरी दुनिया में उनके साथ आज खड़े हैं उनके साथ भी घनघोर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं. This is not a religious conflict. This is a conflict between people who have been colonized, people who are suffering from the worst kind of colonization, and the forces of imperialism. This is what this conflict is all about, and every single human being on this planet has to decide which side he or she is on. And we are, of course, we have made our decision clear, but we have to do much more because we have got a history. हमारी एक परंपरा है हमारे देश की. क्या परंपरा है कि 1938 में गांधी कहते हैं कि अरब लोगों का उतना ही अधिकार है फिलिस्तीन में जितना कि अंग्रेज़ों का है इंग्लैंड में, जितना कि फ्रेंच लोगों का है फ्रांस में. ये गांधी ने कहा in 1938 that the Arabs have the same kind of right to Palestine as the French do to France or the British do to England. So that has been a stand of our freedom movement. And after independence, when India donned the mantle of the leadership, it was a samuhik leadership of the non-aligned movement. They didn't tom-tom the fact that they were Vishwa Gurus or Vishwa this or Vishwa that or even leaders of the global south.
they had come out of a struggle against imperialism and they wanted to stand with other countries who were also part of that struggle of facing the same kind of enemy. And that is why from that time on, we were staunch supporters of the people of Palestine and their cause. तो हमारी ये परंपरा है कि आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हुए तो हम उन लोगों के साथ खड़े हुए, हमने कहा हम तटस्थ हैं, हम उन लोगों के साथ हैं जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि हमारी 56 इंच की छाती है, हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व मित्र हैं, हम ग्लोबल साउथ के नेता हैं, सब कुछ हैं। हमने ये सब कुछ नहीं कहा, लेकिन जो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट था, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई थी, उसमें हमने कहा हम उन लोगों के साथ हैं जो लड़ रहे हैं। लेकिन आज हम कहाँ हैं, इसके बारे में और भी लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन मुझे बस इतना ही जोड़ना है। A lot has been said about where we are today, the shamelessness of our government, the shamelessness of our ministers who are going to international conferences और वहाँ जाकर के बोलते नहीं हैं, मिमियाते हैं। They knew because today they have decided, उन्होंने एक फैसला ले लिया है that they are lackeys of imperialism. They have decided as long as we are number one lackey, we are happy. But we have decided कि हम लोग पालतू हैं साम्राज्यवाद के, बस एक नंबर का पालतू हमको मान लो, क्योंकि भाई हम तो फिर स्पेशल लोग हैं ना, लेकिन हम हैं वही। That's what our foreign minister said in Munich. He said we are not anti-West, we are just non-West. I mean, amazing, very intelligent man. और फिर वो मिमियाते हैं इजराइल से और कहते हैं भाई देखो इतना मत मारो, मार लो लेकिन इतना मत मारो, तुम थोड़ा ज्यादा कर रहे हो। और एक तरफ वो कह रहे हैं मत मारो, और उसी दिन अडानी के जो वो ड्रोन्स हैं उनका एक शिपमेंट जा रहा है इजराइल को ताकि और मारा जाए और लोगों की वहां पर हत्या की जाए। सो इफ वी आर सेइंग द यूएस इज कंप्लिसेंट, द यूके इज कंप्लिसेंट, वी आर आल्सो कंप्लिसेंट। We are also supplying weaponry that is killing, that is part of this genocide. आप देखिए कि हॉलैंड के अंदर जो हॉलैंड की न्यायपालिका है उसने अभी 2-3 दिन पहले पारित कर दिया है कि आप हॉलैंड की तरफ से अब जो वहाँ पर फाइटर जेट्स हैं उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं भेज सकते हैं। You cannot export those spare parts anymore. लेकिन हमारे यहाँ हमको खुशी हो रही है कि ये तो आत्मनिर्भर भारत है, कि देखो हम अपने ही किसानों को ही नहीं मार रहे हैं, हम फिलिस्तीनियों को भी मार रहे हैं, विदेश में भी हम लोगों को मार रहे हैं, यहाँ भी नरसंहार करेंगे, वहाँ भी करेंगे, उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेंगे। तो ये जो हम लोगों की हालत है आज, इसके खिलाफ जो बहुत से लोगों ने क्या हम करें। और हमारे जो फेबियन साहब उन्होंने बहुत एक बड़ी बात की कि बाइडेन इज स्लोली स्लीप वॉकिंग हिज वे टू डिफीट। तो हमारे यहाँ तो स्लोली और स्लीप वॉकिंग नहीं, लेकिन लेट्स इंश्योर दैट दिस गवर्नमेंट आल्सो वॉक्स इट्स वे टू डिफीट। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इफ वी वांट टू वंस अगेन स्टैंड in solidarity with Palestine and with the struggling people of the world. इतना कहकर के मैं 2 बातें ही और बोलूँगी। Please stop. 2 बातें उन्होंने कहा, 1.5। एक तो UNRWA का जो पैसा इन लोगों ने रोक रखा है, ये एक क्राइम है। कोई भी सबूत नहीं है कि उनके लोग हमास की मदद कर रहे थे। नंबर 1, हमारे प्रस्ताव में ये होना चाहिए कि वो जो पैसा है that should be not stop. Once again that aid needs to go there. And lastly I'd like to say, वो कहते हैं, इज़राइल कहती है everyone we are killing is Hamas, everyone we are killing is Hamas, but 2/3 of the people that they've killed are women and children. 2/3. There were 5,000 pregnant women on the 8th of October in Gaza. There were nearly 150 infants in the ICU. I think many of them are not alive today. This is the level of genocide. Just 2 days back, and I will not read it out, I'll ask you to read it, the rapporteurs of the UN
they have come out with a most scathing indictment of the kind of sexual abuse and sexual violence that women in Gaza are facing. They are facing rape, they are facing stripping, they are facing being locked up in cages, they are facing every kind of abuse, apart from the fact that they are denied medical aid, they are denied food, they are denied help for their children. This is what is happening there. This is what we have to recognize, and this is what we have to fight against. This, as I said, is the real, naked, ugly face of imperialism that we have to shed all our illusions about and stand up to fight this real enemy of the people of the world. Thank you.